Hello dear students, I hope you all are doing well. I am your history teacher. So today I will be teaching you the new topic called the making of a global world. So let us quickly see what all we are going to learn in this chapter. So we will be looking at the pre-modern world first of all. Under this topic we will be learning about the Silk Route that used to link the whole world. Then food travels, spaghetti and potato, conquest, diseases and trade. So under the pre-modern world, we'll be looking at these three things, and then we'll be moving to the 19th century and we'll be looking at a world economy takes shapes, how the new world economy took its shape, then the role of technology, late 19th century colonialism, we'll be reading about that. Then we'll be learning about certain diseases like rinderpest, cattle plague, etc. or maybe cattle plague. Then we will be learning about indentured labor migration from India. This we have seen in the previous chapter also. Then we will be learning about Indian entrepreneurs abroad, and then finally we will be seeing Indian trade, colonialism and the global system, how it affected. Okay. After that, we will be moving on to the interwar economy, what happened during World War I, World War II. Okay. So, wartime transformations we will be seeing. Then post-war recovery of the economy, right? Then rise of mass production and consumptions, how it took place. Then we will be learning about an era of Great Depression which started from United States, and then we will be learning about India and the Great Depression, how India dealt with it. Then we will be reading about rebuilding a world economy, the post-war era. Okay, we will be reading about the post-war era, how things happened, post-war settlement and Bretton Woods institutions. The early post-war years we will be seeing. Then we will be learning about decolonization, how Britishers left India, and then how India gained independence. Then finally we will be seeing at end of Bretton Woods and the beginning of globalization. So this chapter will be basically focusing on globalization. So let us quickly begin with globalization. What is globalization? So globalization is basically, exchange of goods between different countries, right? So globalization is generally associated with economy as the free movement of capital, goods, technology, ideas and people across the globe, right? When the movement of capital, different types of goods, technology, ideas, cultures and people, when the movement of all these things happens across the globe, then it is called as globalization. So for example, if you go to a supermarket, in that supermarket you can find coffee from Brazil, right? You can find Chinese goods also, right? What is this? This is example of globalization, that we are able to purchase coffee which was manufactured in Brazil. We are able to purchase the products which were manufactured in China. So all these things are examples of globalization. Similarly, people who are in America, they can use our spices, right? They can use our mangoes. The world best mangoes are produced here in India. So they can use our mangoes. There in different countries you can find our products also. So this is all example of globalization. And the biggest example of globalization in today's time, children, is COVID-19. I hope you all know about COVID-19. It was the first case was found in China, and later on it was spread in all over the world and became a great pandemic. So this is also example of globalization, diseases spreading from one place to another place, right? And technology, internet was first of all evolved in America, right? And now all over the world people are using internet. So example, this is the example of technology. Now ideas, whatever ideas we have here, we can later on share it with the whole the world, right? So like this, whenever the exchange of money, ideas, goods, technology, people or cultures, religions, right, whenever it takes place, then it is known as the globalization. Now you must be wondering that globalization is a new phenomena. No, globalization is not a new phenomena. It is happening since the ancient time. Okay. So globalization in a broader sense also includes cultural exchanges between different countries of the world. Now what does it mean? Even the exchange of culture falls under globalization. So for example, Buddhism,
was spread to China and Japan. How? From India in the ancient time only. Okay, so this is, they adopted our Buddhism, right? And cultural exchange means people who are, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्कॉन के बहुत सारे फॉलोअर्स कहाँ मिल जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में मिल जाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट? सो द कल्चरल एक्सचेंज ऑल्सो फॉल्स अंडर द ग्लोबलाइजेशन. नाउ as I told you, globalization is not a new phenomenon, it is an old phenomenon, because globalization is happening since ages, since ancient times. Let us have a look. Travelers, traders, priests and pilgrims, pilgrims means जो धार्मिक यात्रा पे लोग जाते हैं, traveled vast distances for knowledge, for opportunity and spiritual fulfillment or to escape persecution, which means पुराने टाइम से ही ट्रैवलर्स एंड यू नो, जैसे लोग यात्राओं पे भी जाया करते थे, धार्मिक यात्राओं पे भी, एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट? सो दे वर, यू नो, सम पीपल वर ट्रैवलिंग फॉर नॉलेज, राइट? जैसे फ्रॉम मैनी चाइनीज ट्रैवलर्स केम टू इंडिया, राइट? हेन सांग इज वेरी पॉपुलर. सो मैनी चाइनीज ट्रैवलर्स केम टू इंडिया फॉर लर्निंग अबाउट यू नो आवर रिलीजन, आवर कल्चर, राइट? And many people go from our country to different places for pilgrimage, right? Okay, so they often go. Now they carry goods, money, values, skills, ideas, inventions and even germs and diseases. So when people are moving from one place to another place, they, you know, they will carry some goods. अच्छा, पहले के टाइम पे क्या हो रहा था? People were carrying goods from one place to the another to sell them, right? India ऐसे, see, till 15th century, India was the, you know, the share of Indian economy in the whole of the world was around 23 to 25%. अलग अलग books में अलग अलग variations हैं. So minimum it is 23%. I have always read. Some people quoted 27% also. So what I am trying to say is कि Indian economy was very very strong during that time. Okay. तो कैसे थी? क्योंकि ट्रेडिंग बहुत हो रही थी. सो ट्रेडर्स यूज टू टेक देयर गुड्स एंड दे यूज टू सेल इट अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, सो जब ट्रेडर्स जाते थे तो साथ में डेफिनेटली दे वर कैरिंग गुड्स, मनी भी ज़रूरत थी, मनी ऑल्सो दे यूज टू टेक, और सम वैल्यूएबल आइटम्स, बिकॉज मनी वॉजंट, अभी इन एंशिएंट टाइम देयर वॉज बार्टर सिस्टम. Then values, skills, ideas, inventions, and sometimes people used to carry germs and diseases also along with them. एक place से दूसरे place पे जाने में, right? As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilizations with present-day West Asia. So Indus Valley civilization, you all know, one of the most ancient civilizations, right? So you know, the coastal areas वहाँ से connected हुआ करते थे उस Indus Valley civilization, which is the present West Asia. Okay, so Silk Route linked China with West. Okay, so Indus Valley civilization West Asia से connected था, और Silk Route जो था China का, which is very very famous, that linked China with Western countries. Okay, so China used to trade its silk products to the Western countries. Food travels from America to Europe to Asia. different food, हमारा food भी वहाँ गया, वहाँ का food भी यहाँ आया. So food was also traveling. ठीक है. Now जैसे noodles travels from China to Italy and then became spaghetti. European conquerors carried germs of smallpox in America, right? Once introduced, it spread deep into the continent. So some European people, specifically people from Spain, they carried germs of smallpox in America, और gradually everybody, सब उसकी चपेट में आ गए, और अमेरिका में सबको क्या हो गया? smallpox फैल गया. So these are some examples of globalization. That in the globalization we just don't include only economy, rather we include all the other factors also. Okay. Now let us talk about the Silk Routes link, how it linked the world earlier. So Silk Route was basically a historic trade route that dated from the 2nd century BC. So it is very very old. Okay. Now the Silk Route points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route until the 14th century AD.
सो सिल्क रूट में क्या होता था, चाइनीज पीपल they knew how to produce silk, right? So they used to manufacture silk and then they used to sell it to the European countries. And specifically in ancient Roman Empire, people used to love those silk clothes because it used to be very, very light and the quality was very nice. So people used to love it. So China had the monopoly over this thing, right? And even Indian traders, India ka bhi trade used to flourish during that time. So half of the world economy was driven by India and China altogether during that time. Now the Silk Route stretched from Asia to Mediterranean Sea, traversing China, India, Persia, Arabia, Greece and Italy. Okay, so this was the Silk Route जो एशिया से मेडिटेरेनियन तक फैला हुआ था, right? Now India was also doing the trade with these countries, with Persia, with Arabian countries, Greece and Italy. It was dubbed the Silk Route because of the heavy silk trading that took place during that period, which I told you just now. Famous Chinese silk cargoes used to travel through these routes. As I told you, Chinese, they used to manufacture silk and then they used to take it and they used to follow this route and they used to sail it in the European countries. Along with Silk Route, ऐसा नहीं था कि why it is known as Silk Route, because majorly the silk of China was very famous. As I told you, ancient Roman Empire, people used to love it, right? So monopoly was of silk, right, of China. Other than silk also, there used to be many goods which used to be transported from that particular route, which were pottery from China, textile and spices from India and South Asia also travelled the same route. Now you must remember that the spices of India were very, very popular among these European people. So सबसे पहले जब वास्को ड गामा इंडिया आया था तो वो क्यों आया था? मसालों की खोज में ही आया था ना. और जब वो आया साउथ इंडिया में, ही फाउंड, क्योंकि साउथ इंडिया इज एज इट इज़ वेरी वेरी रिच इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस. सो जब वो आया तब उसको पता चला कि भाई इंडिया तो बहुत ज़्यादा रिच है स्पाइसेस में, राइट? तो एंशियंट टाइम से ही इंडिया जो है वो स्पाइसेस का ट्रेड कर रहा था, है ना. इवन साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, है ना, जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, है ना, यहाँ पर भी मसालों का बहुत अच्छा काम था. ओके. Now, in return, precious metals like gold and silver flowed from Europe to Asia. Now, during that time, money wasn't there. Money तो होती नहीं थी उस ज़माने में. तो क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था. जैसे यहाँ के ट्रेडर्स ने ले जाके वहाँ पर मसाले बेच दिए, बदले में उनको क्या मिलता था? या तो गोल्ड या तो सिल्वर. तो यूरोप का जितना भी गोल्ड और सिल्वर था वो कहाँ आ गया? हमारे देशों में आ गया, है ना. Now, if we talk about culture in the sense of globalization, so culturally Buddhism emerged from eastern India and spread in several directions through the Silk Route. Now in the map here you can see the Silk Route, right? So this all comes under the Silk Route, right? This entire area and this, everything, this is India, right? You all know. Okay. Now, as I told you, the Buddhism was spread in China and Japan. How come from India, right? Specifically from eastern part of India. Now, the food also traveled, right? So, Chinese noodles, right? They became spaghetti. अच्छा, पहले लोगों को बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में भी पता नहीं था, क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था ना, इंटरनेट नहीं था, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, आना जाना इतना आसान नहीं था. थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट, है ना. आज तो एवरीथिंग इज़ वेरी इजी. इफ़ यू वांट टू सर्च समथिंग, यू कैन सर्च एनीथिंग ऑन द गूगल एंड यू विल अंडरस्टैंड इट, है ना. पर उस ज़माने में गूगल नहीं था और मोड ऑफ कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी. फ्लाइट्स नहीं थे, है ना, आना जाना इतना आसान नहीं था, ठीक है. तो क्या होता था? थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट. लेकिन ग्रेजुअली दीज थिंग्स वर डिस्कवर्ड. कैसे? ट्रेडर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे तो वो चीज़ें डिस्कवर करते थे ना. फॉर एग्जांपल, कोई ट्रेडर अगर इंडिया से लेट्स से यूरोप गया है तो वहाँ के तौर तरीके सीख कर आएगा, वहाँ लोग क्या खाते हैं वो देखेगा, राइट. और अपने साथ में कोई फसल अगर वो स्पेसिफिक उगाते हैं तो साथ में बीज भी ले आए, शायद यहाँ भी उगाना शुरू कर दे, है ना. या ऐसी कोई चीज़ जो उसने वहाँ खाई है उसको बहुत टेस्टी लगेगी तो वो यहाँ पर आके अपने बनाएगा ना और उसी चीज़ को खाएगा. तो ऐसे कल्चरल और फूड का भी एक्सचेंज हुआ करता था, है ना.
So traders and travelers introduced new crops to the lands that they traveled, right? तो एक से दूसरी जगह पे जाके अगर उनको कोई चीज़ मिली बढ़िया तो वो आकर उसको अपने कंट्री में क्या करते थे, उगाते थे, एंड देन दे यूज्ड टू एंजॉय. तो क्या हुआ, स्पेगेटी. Noodles traveled west from China to became spaghetti. You all know in Chinese people they eat noodles a lot, है ना? So gradually वो क्या बन गया, इटली तक जाते जाते it became spaghetti, है ना? Arab traders took pasta to 15th century Sicily, an island now in Italy. अच्छा, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ना कि अरब ट्रेडर्स जो ट्रैवल करते थे they must have taken pasta मतलब you know इन 15th सेंचुरी इन सिसली, जो कि सिसली क्या है आजकल इटली के अंदर आइलैंड है, उसको क्या बोलते हैं, सिसली आइलैंड. सिसली इज एन आइलैंड इन इटली. तो ऐसा भी हो सकता है कि अरब ट्रेडर्स ने उसको इन्वेंट किया हो वहाँ पे. ओके, सो दिस वाज अबाउट ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, सो फूड, मेनी ऑफ आर कॉमन फूड्स जैसे सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट्स, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes and so on were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. ये जितने भी फूड के मैंने आपको नाम बताए हैं 5 centuries से ज़्यादा पुराने नहीं है हमारे लिए, because many travelers came to India and they introduced these food crops in India. जैसे पोटैटो इंडिया के अंदर कौन लेकर आया, पोर्चुगीज लेकर आए थे, राइट? टोबैको कौन लेकर आया था, अगेन पोर्चुगीज लेकर आए थे, राइट? सो अलग अलग ये जो फूड क्रॉप्स है उनको इंडिया में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करी, राइट? ओके, पोटैटो. अब जैसे लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ पोटैटो. पोटैटो बेसिकली लोगों इन पुर्तगाली इंडिया में लेकर आए थे. अब उन्हें कहाँ से पता चला, पोर्चुगल वॉज इन यूरोप. सो अमेरिका से इन यूरोपियंस को पोटैटो के बारे में पता चला. अभी यूरोप में क्या था, सी ड्यूरिंग ancient time India was a very wealthy country, very rich country, और चाइना भी रिच कंट्री था. यूरोप की कंट्रीज़ की हालत बहुत ख़राब थी. यूरोप wasn't rich. यूरोप कैसे रिच बना, बाद में बहुत सारे कंट्रीज़ को कॉलोनीज़ बना के, खास करके इंडिया को भी कॉलोनी बना रखा था ना ब्रिटेन ने, तो इंडिया से सारा वेल्थ ही ड्रेन करके ले गए थे. तो ऐसे करके ये लोग अमीर बने हैं. ठीक है, सो क्या हुआ, इन द एंशिएंट टाइम अमेरिका, nobody knew about America, right? So when this Christopher Columbus, he found about America and people got to know about America, और कुछ लोग वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि यहाँ तो लोग पोटैटो बहुत खा रहे हैं, है ना? तो पोटैटो क्या है, न्यूट्रिशियस भी है और टेस्टी भी है ना? और यूरोप उस टाइम पे क्या है, पुअर. सो यूरोप्स पुअर began better and live longer with introduction of humble potato. जब यूरोप के लोगों को पोटैटो के बारे में पता चला तो उनकी लाइफ तो बहुत ईजी हो गई. उन्हें लगा कि दिस इज़ वेरी टेस्टी ऑल्सो, दिस इज़ हेल्दी ऑल्सो, एंड दिस इज़ न्यूट्रिशियस ऑल्सो, एंड दिस इज़ चीप ऑल्सो. पोटैटो कोई बहुत महंगा तो आता नहीं है ना. सो नाउ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप गॉट डिपेंडेंट ऑन पोटैटो ओनली. तो उनको तो बहुत अच्छा लगा पोटैटो, क्योंकि द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वॉजंट रिच ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना? बहुत गरीबी फैली हुई थी वहाँ पे यूरोप के अंदर. तो दे कुड नॉट अफोर्ड मीट. यूरोप का जो उनका जो बेसिक फूड है वो क्या है, मीट है ना? यूरोप में ज़्यादातर लोग मीट ही खाते हैं. मीट इज़ एक्सपेंसिव. अब यूरोप में गरीबी है तो महंगा मीट खरीद के खा पाएंगे क्या, नहीं खा पाएंगे ना. तो उनको जब एक चीप क्रॉप के बारे में पता चला विच वॉज पोटैटो, दे गॉट वेरी हैप्पी कि वाओ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना? ओके, so they got dependent on potato. Then what happened, Ireland's poor peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation. What does it mean? लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए स्पेसिफिकली आयरलैंड में ऑन द क्रॉप ऑफ पोटैटो दैट एक्चुअली क्या हुआ, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि एक बार जो पोटैटो की जो फसल थी ना उसमें एक बीमारी लग गई, पोटैटो ब्लाइट. ओके, तो दिस पोटैटो ब्लाइट वाज अ डिजीज़. ठीक है, जो उसने क्या किया, इट डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप ऑफ पोटैटो. Now people were so dependent on potato that many thousands and hundreds of people died because of starvation. बेचारे वो भूख से ही मर गए. So this was a very unfortunate incident. Now you can look at the picture. बच्चे क्या कर रहे हैं, फसल ऑलरेडी कट चुकी है लेकिन फिर भी वो इस उम्मीद में खेत में गए हैं कि कुछ बचा हुआ आलू का हिस्सा मिल जाए तो उससे हम हमारा पेट भर सके और मरने से खुद को बचा सके. Okay, so this was about the food. Okay, how food traveled from one continent to another or from one place to another, from one country to another.
To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.